Assalamu alaikum. Well, this is the second lecture, and the lecture is again on budget. In the first lecture, we have gone through the concept of budget, the origin of the budget, the introduction of the budget, the different types of data into it, the constitutional validity, and all that. Now, in this part of the budget, we will be dealing it in a detail so that you will be able to have a better picture of this concept of this budget. Well, still I will start with that कि budget simply means income and expenditure of the government. सरकार कहाँ से पैसे लाती है, कहाँ को ये खर्च करती है, that is entirely what the budget is all about. वहाँ से सिर्फ it only depends कि nature of income तो nature of expenditure क्या छ आसन, we will discuss that here. तो for your convenience and so that it doesn't take too much of time, मैं थोड़ी ब्रोटी बनाई तो because you know how tough it is. In fact, I know how tough it is to upload a video on a social media these days. The budget simply means revenue budget. Budget has been classified. It means budget को दोन हिस्सों में divide. Revenue budget तो capital budget. Revenue budget and capital budget. यत में तुझ budget word, हत में तुझ budget word. So when यम साथ में वो budget simply वना income तो expenditure. यत में तुझ वना ये revenue budget, income तो expenditure government. Capital budget में तुझ वना income तो expenditure of the government. तिल क्या जरूरत है revenue budget तो capital budget अलग अलग करने. The difference is that in revenue budget only that part of the income and expenditure, only that part of the income and expenditure is taken which does not create asset or liability for the government. Important, huh? Revenue budget is so income to expenditure thavan yem sit na asset ban na khas liability na khas government is karzi. Capital budget so part of the so that part of the income and expenditure. Atma so income to so expenditure even yem sit government's asset bane ya khas liability. Both. It can be both. Suppose revenue budget should. मैं वनो तो कि atma even income to expenditure. Income is sir, it is that income which does not create liability. Expenditure goes to which does not create asset. Capital budget smush agar income it creates liability, agar budget agar expenditure it creates asset. For example, let me give you an example. Suppose Zanafar A to B. Suppose there are two persons A and B. Suppose A is post, B is post. Post. Both got income. A also got the income, B also got the income. Suppose A is mile income through Musliman through zakat. Suppose A is to zakat. B is to qarz, loan. A is mile income, B is mile receipts. They both got income. Magar A since income is such a zakat, emis khud na qarz it does not create liability. A is khud na qarz, while as B and loan. B is to loan. B is khud qarz. Go, you see A receipts, you see A income. This part of the income does not create liability. Go, so income which does not create liability comes under revenue budget. While that part of the income which creates liability comes under the capital budget. This is income. If that is expenditure, let me give you an example. Suppose suppose for the consumption purposes, shopping, phone, laptop, and all these things. The mesh pons gasan kharch, bus kharchavan pons. Magar yim pons bum kharchavan, these are meant for my consumption purposes. Pani day-to-day use khatra. Ye expenditure should banaun main khatra property. This part of the expenditure does not create assets. Go so expenditure usne assets create karke that comes under the revenue budget. So expenditure should revenue budget. While I suppose why kharcha bu pons baham zameen kunjay moil ya baham bidim kais loan zameen है moil ya loan dim kais चाहे bu zameen है चाहे bu loan dim go me roos property falain nafras ek me pons me roos teknas property falain jay me zameen has that is an asset me go asset create pons kharcha me has zameen moil I am spending money but I am at the same time I am creating asset goes ती chu matlab revenue budgets mein so income so expenditure even which does not create income as well as which does not create revenue budgets must income to so expenditure even which does not create assets as well as liabilities. While as capital budgets must that part of the income and expenditure even which does create assets as well as liabilities. I am wrapping it fast so that your time gets this revenue budget is classified into two things, two parts, revenue receipts and revenue expenditure. Now, my wish is that Sarkar kapar tim posan yem sitnims karaj khasan. By revenue receipts, I mean to say Sarkar kaichanan tim pos yem sitnims karaj khasan. What are the sources of the income for the government which does not create liabilities?
तो इस रेवेन्यू रिसेप्ट यह फर्दर कर अत किस्म अत ज किस्म टैक्स रेवेन्यू ब्या नॉन टैक्स रेवेन्यू तो नॉन टैक्स रेवेन्यू चाहे टैक्स रेवेन्यू चाहे नॉन टैक्स रेवेन्यू यम दनवे सोर्सेज ऑफ इनकम टू द गवर्नमेंट मगर एसेट क्रिएट लाइबिलिटी क्रिएट गह ठीक टैक्स रेवेन्यूस मज गो डायरेक्ट टैक्स कॉर्पोरेट यम टैक्सेस गवर्नमेंट्स टैक्सेस दिवन दैट इज द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट चाहे इनकम सरकार मोस्ट ऑफ द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट कम्स फ्रॉम द टैक्स सोर्सेज गो सरकार पोस दिवन थ्रू टैक्सेस मगर अम सकान सरकार कर्ज कह सपोज बहुत दिवन सरकार टैक्स लक्ष रुपये या 50,000 या 10,000 या 20,000 या तुम दिवन टैक्स तुम पलव अनान तुम कह चीज तुम अनान तक टैक्स तथ मज मगर तुम गवर्नमेंट्स दपान यह कह मे दुत रात रुपये 100 टैक्स मे दी वापस यह सह गवर्नमेंट सह कंपल्शन कह ये सात टैक्स डेफिनेशन पढ़ान कि दपान कि टैक्स इट्स अ कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय द सिटीजन्स विदाउट ऑन विच इट कैन नॉट क्लेम इस गवर्नमेंट्स क्लेम हेको कर गो रेवेन्यू रिसिप्ट्स मज तम सोर्सेज ऑफ इनकम विच डज नॉट क्रिएट लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट गो अत मज टैक्स रेवेन्यू तो नॉन टैक्स रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यूस मज वन मे तमाम तम टाइप्स ऑफ टैक्सेस यम गवर्नमेंट पे कर तो नॉन टैक्स रेवेन्यूस मज सपोज तुम कॉलेज गसान तुम एडमिशन विज फी भरान फी दिवन सो फी सरकार इनकम बनान तुम हेको तम सरकार वन कि दुत रत फर्स्ट सेमेस्टर्स मज फीस रुपये 30,000 वो गम वापस यू कैन नॉट क्लेम दैट तुम हेको क्लेम कर या सरकार कुछ सात या ब्या सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट ग्रांट्स मतलब गो कुछ सात कह पाकिस्तान मुल्क दिवन अरबिक शेख तम दोहे ग्रांट्स दिवन इमरान खान दोहे दिवन अरबिक शेख ग्रांट्स बाय ग्रांट्स इट मीन्स कि वापस कर यमो सो कर्ज खोतमुत कह या सेंट्रल गवर्नमेंट दिवन देयर कैन बी इंटरनल ग्रांट्स यम सात कह स्टेट गरीब पान कह स्टेट गरीब तम सरकार दपान अस ग्रांट्स अस दिस पोस यम वापस दिमो कह या प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स सरकार पन्ने कह इंडस्ट्रीज पन्ने कह फर्म्स तम इंडस्ट्रीज तम फर्म्स कह ना कह पोस जेनान प्रत वरी गो सत गवर्नमेंट्स बनान इनकम या इंटरेस्ट पेमेंट अस लोन कंस मुल्क दितमुत कंस नफरस लोन दितमुत लोन पोस वन कि इंटरेस्ट पेमेंट गो तथ लोनस पे इंटरेस्ट खसान गो चाहे टैक्स रेवेन्यू चाहे नॉन टैक्स रेवेन्यू यम दनवे सोर्सेज इनकम गवर्नमेंट्स बनान यम लाइबिलिटी क्रिएट गसान सो whether it's tax revenue, whether it's non-tax revenue, these both are called revenue receipts. By revenue receipts, I simply mean it's that part of the income, which is the income government, which does not create liability for the government. It's not liability, which is कर्ज government खड़ा. Then we have revenue expenditures. By revenue expenditures, I mean to say it is that part of the expenditure of the government. You should suppose use government खर्चावन यम सत प्रॉपर्टी ती बनान कह या दोमे लफ्जन मज वनो it is that part of the expenditure which is meant for the day to day governance. युस सरकार चलाने के लिए युस वरियस में सरकार पकनावन दो यम डे टू डे लाइफ डे टू डे गवर्नेंस रन करने खतर युस खर्ची लगन गवर्नमेंट्स तथ वन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या वन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सपोज इन इट वी हैव सैलरीज सैलरी दिवन मुलाजिमन गवर्नमेंट दिवन सैलरी गो सरकार खर्च खर्चावन इन द शेप ऑफ सैलरीज तो इट्स ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अम प्रॉपर्टी क्रिएट गसान अम एसेट क्रिएशन गसान सब्सिडीज बाय सब्सिडीज वी सिंपली मीन दैट पार्ट ऑफ द इनकम विच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑन आवर बिहाफ कशिर पे गो गैस सिलेंडर सर तथ मार्केट्स मज तथ कीमत 1500 कूत 1600 अस कत पे 900 गो यम 700 यह सान बदल दिवन गवर्नमेंट तमिस सह 900 पेवान कि अस पे 900 मगर सरकार बराबर 600 गो दैट पार्ट ऑफ द इनकम विच इज गिवन बाय गवर्नमेंट ऑन आवर बिहाफ सान बदल पोस गवर्नमेंट दिवन तथ वन सब्सिडीज कि यह सरकार खर्ची सब्सिडीज बोड़ बार कल दो हिंदुस्तान किस गवर्नमेंट्स गो यह गवर्नमेंट खर्ची मगर अम सत क्रिएशन ऑफ एसेट्स कह डिफेंस एक्सपेंडिचर डिफेंसस पे इन द करंट क्राइसिस कोविड क्राइसिस मज गो जबरदस्त दिस क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट्स कि सिर्फ खर्चावन पन्निस डिफेंसस पे यू आर पेइंग नो हेड टू योर हेल्थ सेक्टर एज वेल एज ऑन एजुकेशन गो डिफेंसस पे तीस खर्ची गसान सत क्या सत रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लॉ एंड ऑर्डर ग्रांट्स टू स्टेट्स दीज ऑल आर called revenue expenditures. Go revenue budgets which you revenue receipts to revenue expenditure. Revenue receipt simply means that part of the income which does not create liability. Revenue expenditure even that part of the expenditure which is meant for the day-to-day governance which does not create assets. Then we come back to the capital budget. Capital budget simply it's
that part of the budget which that part of the income and expenditure. By budget I mean to say income and expenditure. So income and expenditure yem sit asset banen ya banen liabilities ya khas qarz. Suppose at much revenue receipt sarkar chu pons kapar tan yivan magar ye pons chu kharan emis kya qarz. Capital receipts gay yit chu sarkar's income, yit chu sarkar's taxing per income. Magar em income sit chu koshbi su tan me example disu temis nafrasan ekis nafras dit me ek nafran pret zakatik pons be nafran pret loanik pons. Go zakat wali ya qarzik pons. Zakat walis banyo su revenue receipt temis khut na qarz kien. Yemis bane yem su qarz root yemis yem su loan yem su wazum het ekis nafras temis banyo capital receipts. Danwani ay pons. Go capital receipts much yi hayon. Suppose India government chhawn kun sat qarz borrowing chhawn ye IMFs World Banks या internal borrowing करी RBI से ये पोंस income चेमिस यवन मर एम income से चेमिस तावनस एम शु खसन कर्ज छठी these all receipts are called capital receipts यमो से खसन एमिस कर्ज then we have capital expenditure by capital expenditure क्योंकि capital expenditure मतलब गो सु खर्ची इस कट में तो तनवई वो कि अगर ब लैपटॉप फोन शॉपिंग कर खर्चाव पोंस बहुत पोंस खर्चावन फॉर द कंजप्शन पर्पसेस स खर्चावन वन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अम मे प्रॉपर्टी बनान वह अगर बह कुछ जमीन टुकरा हम मल कुछ फ्लैट हम मल तम मे बनान क्या तम मे प्रॉपर्टी बनान तम मे एसेट बनान स खर्ची वनो कैपिटल ये कट गवर्नमेंट तह पोंस खर्चावन यम तमिस एसेट क्रिएशन गसान डिफेंस एक्सपेंडिचर वो तुम तन कि सह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मज मगर बट all the defense expenditure is not counted as revenue expenditure. तो अगर याद है परोस ये रफालस पे कुछ जबरदस्त पांग मीडिया that was in the hotline परोस Indian government and hit क्षेत्र रफाल Russian governments go that part of the expenditure is called capital expenditure क्योंकि तम सिद गई क्या तम सिद गो युस इंडिया डिफेंस स्ट्रक्चर छु डिफेंस एसेट्स यम छु तम गई इंक्रीज डिफेंस की एसेट्स तम गई इंक्रीज that part of the expenditure is called defense expenditure. तो सह कैपिटल एक्सपेंडिचर मज क्योंकि तम गई एक्सपेंडिचर तम गई एसेट्स क्रिएट लोन दिवन स्टेट्सन सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट दिवन लोन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स गो अमिस ये प्रॉपर्टी वन अमिस फलान गवर्नमेंट फलान स्टेटस नश पोस रोजान या ये कुछ सात लोन टू द नेपालस हैसियत ती नेपालस दिन लोन बांग्लादेशस अफगानिस्तानस गो यमन जायन बनान क्या इट क्रिएट्स एसेट्स फॉर द कंट्री या लोन रीपेमेंट कर्ज हेतमुत कर्ज हेतमुत पत अगर ये सात वापस दिमो ये सात वापस सह कर्ज दिमो गो सह कर्ज वापस दिवान पोस खर्चावन मगर अम खर्चावन सम by spending by paying loan back liabilities कम गसन साइन liabilities कम reduction in liabilities is also a sort of a asset creation ये सात साइन liabilities the कम गसन that means करन capital expenditure. So to wrap up थोड़ा introduction budget simply means income and expenditure of the government सिर्फ फर्क पर nature revenue budget simply it's revenue budget goes to income and expenditure of the government which does not create assets or as well as liabilities. Capital expenditures which is it is that part of the income and expenditure which does create assets as well as liabilities. Revenue budget is further classify revenue receipts to revenue expenditure. In revenue receipts which is sa income liabilities create gasan the revenue expenditures which is so expenditure use sarkar sit asset ganan day to day life must like enemies day to day government pakraun khatir like enemies expenditure that revenue expenditure. Revenue receipts which is tax revenue sarkut bodbar source of income to the government. The non-tax revenues which direct tax, corporate tax, GST, non-tax revenues which profits and dividends, interest payment, fees, penalty, fines. Suppose chalan gasan ya penalty each one government's income. Sa income karaz government's gasan kya. The expenditure, revenue expenditures which salaries, subsidies, defense expenditure, law and order expenditure, grants to states. The capital expenditures must be income, team income, liabilities create recovery of loans, market borrowing, internal borrowing, capital expenditure, asset creation, liabilities come. Danway cheese, asset create, not liabilities come. Defense expenditure, loans to the state, loan to the foreign government, loan repayment. Sorry, I have no other choice. Seriously, I have no other choice. I just want to reduce the time of the video so that you can upload jaldi and you now go back to your books. You should just get any book you have with you
तो या Google करियो whatever it is possible. Inshallah, in the next chapter, we will be discussing deficits. So, important while we deficits maklao, that will be done. Budget maklis let's the pathochus next topic, which is syllabus, we will go as per our syllabus. Thank you so much.